court cases, petitions, strikes, everything is happening for the entrance exams by various authorities. So this is an article which I've taken from various news articles that about the coronavirus and everything. So यार 2020 सिचुएशन ख़राब है, अभी क्या कर सकते हैं. अभी NSUI ने हंगर स्ट्राइक किया है. So NSU National Student Union of India have put on a started a indefinite hunger strike on Wednesday against the conducted of the JEE and NET exam during the pandemic. Student wing of the Congress have said that despite the opposition and concern raised by the student, the government is moving forward. ठीक है, तो गवर्नमेंट का डिसीजन से ज़्यादा दिस इज सुप्रीम कोर्ट हैव सेड टू कंडक्ट द एग्जाम. दैट्स द वे द मेन प्रॉब्लम स्टार्ट. सो पीपल हैव डन द कोर्ट केस एज वेल. अराउंड स्टूडेंट फ्रॉम different states have come together to put the case against Supreme Court, saying that the coronavirus, because the coronavirus exam should be cancelled, postponed. ठीक है, तो वो भी अभी क्या होता है उसका, उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट हैव सेड कि एग्जाम विल हैपन. या एंड आफ्टर दिस ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर कमिंग. So this is the first hunger strike is happening. That is the first news which we are looking at. Now CM Naveen Patnaik have dialed PM Modi and telling him to seeking the postponement of the JEE exam. So the CMs are also now asking the Modi ji to postpone the exam. They are, which makes sense as well. And in these coronavirus thing, the hashtags are going on. So Modi ji postpone JEE NEET is a hashtag which is going on now. It's quite active on Instagram and Twitter everywhere. 25 lakh students and 25 lakh parents, 50,000 innocent lives are at stake. Yeah, so there's two students are posting that as well. See, considering two parents, it can go up to 75 lakhs as well. Even BJP MP Subramaniam Swamy have also written to PM Modi to postpone the exam. See, please note the one thing: nobody saying to cancel the exam. Everyone is saying to postpone the exam. Yeah, students are now planning to protest from home, show black flags to NTA's decision to conduct the exam. Now this is online activities going on. 7 non-BJP CMs have jointly moved to Supreme Court for the postpone of exam. DMK and Aam Aadmi Party is backing their decision. Everyone wants the exam to be postponed. Cancel नहीं होगा यार. Now coming to our MB का point. Now NEET JEE, like most students and parents are in favor of the exam. This is what is said by the Union Education Minister. What are you favor of? Yeah, देखो भाई, if you look at that one point of view, yes, because the coronavirus situation, everything bad, this and that, exam should be postponed, agreed. But people are still going out. Banks वाला बैंक में daily जा रहा है. We can go out one day for the exam with all the precautions. So both the sides you can look at. What is your take? You have to decide, because every individual is taking his own stand. आपका क्या stand है? Please comment on that. Now coming to the MBA का thing, NEET and JEE में जो होगा वही अपना CAT के साथ होगा. CAT, CET, all the exams we have to just wait and watch. We are 3 months का time for that. See, NEET and JEE, if they want to conduct the exam online means घर से अगर आप exam दे सकते हो, that can't be done in 2 weeks का time, because exam is coming in 2 weeks. But CAT have got 3 months का time. So there is a possibility that CAT might go online. यार पोस्टपोन हो भी गया. Let's assume the exam is postponed by how much time? 1 month, 2 month? या तुम्हारा मैथ्स वर्ड थोड़ा चेंज होने वाला है. सिलेबस इज गोइंग टू बी सेम ओनली. या वट एवर एक्स्ट्रा टाइम वी आर गेटिंग, वी विल गिव मोर मार्क्स. So you have to consider that CAT is going to be in November and CET is going to be in March. If you get 1 month extra, 2 months extra, we'll give extra marks, we'll study more topics. ठीक है, उसके बाद पढ़ना बंद करने का स्ट्रेस नहीं होता ना यार. आप द हंगर स्ट्राइक का फोटो जो स्टार्टिंग में था, आप में से खुद बताओ हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू सिट फॉर द हंगर स्ट्राइक. ठीक है भाई, तो जितना टाइम वहाँ जाके बैठने में लगा रहा हो उतने में एग्जाम दे के आ जा. ठीक है, सो I don't want to get into all these sides. So both the sides have their own points, no doubt. Both the sides have the valid point. Supreme Court का valid point that court can happen, can open. Why can't the college open? So everybody have their own point. What is your stand? You decide and post. So we have to just wait and watch. We can't do anything. ठीक है, हमारे तुम्हारे में गाली गलौज करके बातें करके हम बातें हो सकती हैं. ठीक है, मैं तभी आ रही है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी चल रहे हैं ना फैमिली के, सब में एक ही बात चल रहा है कोरोना वायरस को लेके. सो जो होगा देखा जाएगा. विल जस्ट वेट एंड वॉच क्या होता है. ठीक है, आई विल कीप यू अपडेटेड. दैट्स माई प्रॉमिस टू यू. ऑलराइट, ऑल द बेस्ट. सिचुएशन तो सैड है यार. बाय दिस टाइम लास्ट ईयर वी टॉकिंग अबाउट मॉक स्कोर्स एंड एवरीथिंग एल्स. नाउ वी टॉकिंग अबाउट एग्जाम होगा कि नहीं होगा.
सो अभी कुछ कर नहीं सकते इसका यार. माई एडवाइस टू स्टूडेंट्स इज वेरी सिंपल. रादर लुकिंग एट दैट, आप अपना तैयारी करते जाओ, जो भी होगा विल कीप अपडेट. आई नो इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी एज वेल, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, और कोई ऑप्शन भी नहीं हमारे पास. ठीक है, ऑल द बेस्ट.